love? Right. It's the age-old question. We hear it all the time. But usually when people ask that, they're looking for, I don't know, a philosophical answer. Or maybe a spiritual one. Yeah, moral judgment. Exactly. But today, for our deep dive, we are going to look at that question through a very specific, slightly colder lens. We are looking at the actual biology of it. That's right. Because we aren't asking if money should buy respect. We're asking if there is an actual switch in our brains, like something deep in our evolutionary wiring, that decides whether we respect someone because they have a massive bank account or, because they're actually a decent human being. And to do that, we have a really interesting stack of sources today. We've got some blog posts on moral character and this idea of true respect. We've got some sociology and virtue ethics entries just to get our definitions straight. Right, foundational stuff. Yeah. But the heavy hitter today, and I literally had to read this one 3 times to fully wrap my head around it, is this very dense academic paper. Oh, the Manner and Case paper. Yes, it's on evolutionary psychology, specifically regarding dominance and prestige. It is a dense paper. I mean, no getting around that. But it's really the skeleton key for this entire discussion. It basically argues that there are 2 completely different ways to climb the social ladder. And honestly, once you understand the difference between the 2, you will never look at your boss or politicians or even like your own friend group the same way again. It really does explain so much. It's essentially chimpanzee politics versus human role models. So our mission for this deep dive is to unpack the actual mechanics of social status. Is it just about having the biggest stick or the biggest wallet, or is there something entirely different going on? Well, to start, I think we have to clear up some confusion about the words we're using. Because when you or I say status in casual conversation, we usually just mean rich. Right, yeah. You see the fancy car, the tailored suit, the VIP table, and you just think, okay, high status. Exactly. But if we look at the sociological definition, and here we're drawing heavily from Max Weber, who is basically the godfather of modern sociology status, is very distinct from wealth. Oh, absolutely. Weber actually broke it down into this 3-component theory. He said there's class, there's status, and there's power. Okay, let's separate those out. Right. Because I definitely tend to lump them all into one bucket. A lot of people do. So think of it this way. Class is purely economic. It's your wealth, your assets, your property. It is the Ferrari. Got it. Power, on the other hand, is your ability to basically force people to do what you want, regardless of whether they actually agree with you or like you. So like a general in the military. Or a dictator. Precisely, you have to obey them. But status. Weber defines status as honor. It's about relative social value, assumed competence, and freely given deference. It's about how people feel about you, not just what you own or what you can force them to do. So just theoretically, you could have massive class-like, tens of millions of dollars, but absolutely zero status. Oh, absolutely. I mean, think about a lottery winner who blows all their money on gaudy, flashy things and treats all their neighbors terribly. Oh, right. Technically, they have high class, but they might have rock bottom status in their actual community. Nobody respects them. Conversely, think of like a dedicated local school teacher or a priest. Very low class. They certainly aren't rich, but they can have incredibly high status in their town. That makes a lot of sense. And the sources also mentioned this idea of the big fish phenomenon, which I thought was such a helpful visualization, because status isn't just this fixed number tattooed on your forehead. It's totally relative to the room you're currently standing in. Right, it's highly context dependent. Say a top-tier heart surgeon walks into a patient's hospital room. In that room, they're basically a god. Extremely high status. Everyone defers to them. Exactly. Right. But that exact same doctor walks into a hostile budget meeting with the chief of medicine, the hospital CEO, and the board of directors. Suddenly, they might be the lowest status person at the table. Which perfectly explains why someone can feel like an absolute king at their local golf club, but then they feel totally invisible when they go to a huge national conference. Yes. And this leads us right into that money versus respect dilemma. One of our sources makes this really great point about conditional respect. Yes, that part really stuck with me. It's this terrifying idea that if people respect you for your car or your money, they aren't actually respecting you. No, they're respecting the object. The respect is entirely conditional. If the stock market crashes tomorrow and the bank repossesses the car, the respect vanishes instantly. Oof, gone. The source argues that this is just a miserable way to live because you're basically constantly renting your dignity. It's incredibly fragile. Based on character. Things like integrity and honesty. Those, interestingly, the sources note this concept
of the happiness threshold. Right. The money plateau. Exactly. Money increases your life satisfaction, but really only up to the point where your basic needs and comforts are met. Once you're safe, you're fed, your kids are okay, the link between getting more money and feeling more happiness weakens significantly. Okay, so let's but here is where we really need to pivot to the hard science. Because it turns out evolution has actually given us two very distinct roads to the top, and they function completely differently in our brains. Yes. Of the whole deep dive. The paper outlines these two distinct strategies for climbing the social ladder: dominance and prestige. And I want to be really clear for you listening, these aren't just personality quirks, these are deep-seated evolutionary survival strategies. Let's start with dominance, because this is the really ancient one, right? Yeah. The chimpanzee model. Very much so. Dominance is ancient. We share this with many other primates. It is a status strategy entirely based on fear, intimidation, and coercion. The mechanism here is brutally simple. It's basically, I will take the resources and I will physically hurt you if you try to stop me or take them back. So literally, I am bigger than you, so give me the banana. Essentially, yes. Oh, so sure. It's very distinct from what we think of as good leadership. It's about extracting deference through threat. Physiologically, the strategy is heavily linked to high testosterone, and the emotional vibe, the way it feels internally, is what psychologists call hubristic pride. Hubristic pride. That sounds just delightful. It's arrogance, it's conceit, it's this deep-seated belief that I'm inherently better than you and I'm going to prove it by putting you in your place. In a dominance hierarchy, the followers aren't following because they like the leader. Right. They're following strictly to avoid terrible consequences. Okay, so that's the schoolyard bully. That's the authoritarian dictator. But the good news is, we aren't just chimps. We have this completely other path available to us, which is prestige. So how does that one work? Prestige is, well, it's uniquely human, or at least it's vastly more developed in humans than in any other species. And it emerged because humans are what anthropologists call cultural learners. Meaning, we survive by learning from each other. Exactly. Think back to hunter-gatherer times. If you wanted to survive, you couldn't just figure everything out on your own by trial and error. That is way too dangerous. You'd eat the wrong berry and die. You needed to find the person in the tribe who made the sharpest spears, or the person who knew exactly which mushrooms were safe to eat, and you needed to copy them. Oh, so this is where that information goods theory from the paper comes into play. You got it. Information goods theory suggests that human evolution highly favored people who could correctly identify the most skilled person in the group and then defer to them. In a prestige hierarchy, the subordinate is thinking, I want to be as close to this person as possible so I can learn their secrets. So the deference is freely given. It's not, please don't hit me. It's, please teach me. Correct. And that changes the entire dynamic of the relationship. The leader receives status as a kind of social payment for sharing their valuable knowledge. And the emotional vibe there isn't hubris, it's authentic pride. It's a quiet confidence based on actual accomplishment and a genuine desire to be helpful. That is just a massive shift. One is forcibly taking status, and the other is being freely given status. But honestly, here's the part of the paper that totally blew my mind. They didn't just sit around defining these terms. They actually put regular people into a lab to see how these two different types of leaders behave when things get stressful. Yes, the manner and case experiments. And the results are honestly kind of shocking. So they put participants into leadership roles for a group task, but they added a catch. For some of the leaders, they told them that their position of power was unstable. Like you could be voted out? Basically, they said, depending on how things go, the group might decide to replace you as leader. It's very high stakes. And then
The researchers secretly introduced a highly talented subordinate into the group. Basically, a regular team member who was obviously brilliant at the specific task, maybe even noticeably better than the leader. Okay, so if I'm a prestige leader, meaning I genuinely want the group to succeed, I should absolutely love this person, right? This is my star player. Let them score the point. And you do. The research shows that prestige-motivated leaders totally embrace the talented person. They empower them, they give them resources, because if the group wins, the prestige leader gets more credit anyway. Their status is intimately tied to the overall success of the group. But the dominant leader, the chimp brain, The dominant leader sees a massive threat. When a dominant leader feels their power is unstable, they suddenly do not care if the group succeeds or fails. All they care about is keeping their crown. So, they actively sabotage their own group to protect their personal rank. the actual examples of this sabotage in the paper were wild. It wasn't just that they were being mean, they were incredibly strategic and calculated about it. Let's walk through some of those tactics. What does a threatened dominant leader actually do to their own team? Well, one of the main tactics is demotion or straight up ostracism. In one of the experiments, there was a task where someone needed to solve these really complex puzzles, and someone else just needed to do administrative stuff, basically holding a stopwatch. The dominant leader took the absolute genius puzzle solver and forced them to be the timer. That is so incredibly petty. They literally wasted the best talent in the room. Just you hold the stopwatch so you don't outshine me. Exactly. And another big tactic is information hoarding. If the dominant leader receives a critical clue that would help the team solve the problem, they just keep it to themselves. They would literally rather watch the team fail than share the clue and let a subordinate look smart for solving it. I feel like everyone listening right now has had a boss exactly like that. The one who purposefully leaves you off the CC line on an email because they just have to control the flow of information. Oh, it's a classic dominance move in the corporate world. And there was also the keep your enemies close tactic. You would intuitively think that if a leader felt threatened by a rival, they would send them far away. But dominant leaders often specifically chose to sit physically right next to the talented subordinate. They wanted to monitor their every move. It's this paranoid hypervigilance. And the one that sounded the most like literal primate behavior to me was the divide and conquer strategy. Oh yeah, that comes straight from the jungle. Yeah. So alpha chimps in the wild will frequently intervene to stop a beta male and a gamma male from grooming each other, because if those lower ranking males bond, they might form a political alliance and overthrow the alpha. The study showed human leaders doing the exact same thing. They actively prevented subordinates from chatting, socializing, or working in pairs. It's so manipulative. Yeah. But it perfectly explains those wildly toxic workplaces where the manager gets super suspicious if the team goes out to lunch together without them. Yeah, it has nothing to do with productivity. It is entirely about preventing a coup. And the last sabotage tactic that really stood out was role mismatching. They would take a team member who was a brilliant verbal communicator and force them to do complex math, or vice versa, purely just to make them look incompetent in front of the group. Even if it tanks the team's overall score. Especially if it tanks the team's score, as long as that failure can be publicly blamed on the subordinate. So the key takeaway here is pretty grim. For a dominant leader, their own personal status is always more important than the survival of the group. However, there was one fascinating twist in the research. There was one specific scenario where the dominant leader completely stopped the sabotage and actually started playing nice. Yes, the us versus them scenario. When the researchers tweaked the experiment and told the group that they were now directly competing against a rival group in the next room, the dominant leader suddenly shifted gears. They completely stopped sabotaging the talented person and immediately started utilizing them to win. So the bully only becomes a good general when there is a war. Precisely. It instantly shifts their mindset from me versus you to us versus them. Which honestly explains so much of human history. We tolerate, or sometimes we even actively crave, dominant, aggressive leaders whenever we feel threatened by an outside enemy. Exactly. Fear triggers our primal desire for a strong man to protect the borders. Okay, so we have the biology down, we have the anxious chimp brain fighting with the cooperative human brain. But thankfully, we're not just slaves to our biology, we also have philosophy. We do. And this is where we bring in the Wikipedia source on virtue ethics. We're looking specifically at Aristotle here, and this provides a totally different framework for thinking about status. It elevates us from simply asking, how do I survive, to asking, how do I actually live well? Right, because Aristotle isn't interested in how you dominate the guy next to you.
He's obsessed with this concept of eudaimonia. Right. Which people often casually translate as happiness, but a much more accurate translation is human flourishing. It's not just a fleeting emotion of feeling glad, it's an objective state of being. It's functioning at your absolute highest potential as a human. And for Aristotle, the only way you achieve eudaimonia is through virtue. And virtue isn't just mindlessly following a strict list of rules, right? It's fundamentally about your character. It is your character. And his key concept for building character is the golden mean. Aristotle says that virtue is always the sweet spot right in the middle of two extremes. So take courage, for example. Courage isn't just having zero fear. If you have absolutely no fear, you're rash. That's a vice. You just run off a cliff. Exactly. But if you have way too much fear, you're a coward. Also a vice. Courage is the perfectly balanced mean right in the middle. And the source mentions it's the same with friendliness, right? Yes. Friendliness is the virtuous mean between being a total obsequious suck-up on one end and being a bitter, cantankerous grouch on the other. So how does this philosophy connect back to our whole dominance versus prestige discussion? Because it definitely feels like the dominant leader is operating way out in those toxic extremes. Well, if we look at the source we have on true respect, it makes this fantastic point that raw knowledge or competence alone is not enough. You can be an absolute genius, like that talented subordinate in the lab experiment, but if you completely lack character, you don't automatically get true respect. You might get technical prestige, but you fall into what the source cleverly calls the knowledge trap. The knowledge trap. Yeah. Is that like when someone intentionally uses overly complicated jargon just to sound smarter than everyone else in the room? Exactly that. If you are using your intelligence, weaponizing it to signal your status and make other people feel small, that is actually a dominance strategy in disguise. It's arrogant. We are right back to hubristic pride. But if you use your knowledge to patiently uplift others, to serve the group and solve problems together, that is prestige perfectly combined with virtue. Okay, that clicks perfectly. It seems like true respect, the kind that actually lasts, is basically prestige, meaning true competence filtered through virtue. That's a really great way to summarize it. The source uses this analogy that I love. It compares popularity to a Halloween costume. It's flashy, it definitely gets everyone's attention for a minute, but it's entirely surface level. True respect, though, is like your favorite worn-in hoodie. It's comfortable, it endures the test of time, and it's real. I really love that hoodie analogy. It just makes the whole concept so tangible. So let's get really practical for a minute. If you are listening to this right now and you want to build that hoodie kind of respect in your life, not the cheap Halloween costume popularity, what is the actual recipe? Because the sources did give us a few very specific ingredients. They did. And the first one is incredibly simple to say, but notoriously hard to actually do. Listen more than you speak. Why is listening considered a status move? Because dominance constantly demands to be heard. It's always shouting, I am the alpha, listen to me right now. Prestige, on the other hand, quietly earns the right to be heard. When you actively listen to someone, you are essentially conferring status onto them. You are telling them, you have value to me. And paradoxically, doing that brings immense status right back to you. Right, because it shows you are completely secure in your own position. You don't need to shout. Exactly. The second ingredient is integrity, simply keeping your word. Which obviously builds trust. And trust has to be the bedrock of that freely conferred deference we talked about earlier. If I can't fundamentally trust you, I am only ever going to follow you out of fear. Right. And the third ingredient is practicing gratitude. This actually goes back to a great example from the sources about how you treat service workers. Being intentionally rude to a waiter instantly signals that you see yourself as inherently better than others. It is a massive, flashing dominance signal. But gratitude naturally checks that hubristic pride. It signals to the room that you recognize you are part of a larger web of people, not just a solitary king sitting on a hill. And finally, the last ingredient is standing up for what is right, which obviously takes courage, hitting that golden mean of courage we just talked about. And you know, the most interesting thing that the source notes about all this is the internal reward. When you spend your life pursuing status through dominance, you are constantly, relentlessly paranoid. Because you literally have to be. You have to watch your back 24/7. You have to monitor the seating chart at the meeting. You have to stop your employees from talking to each other in the break room. It is exhausting. You are essentially the anxious chimp stressing out at the top of the rock, just waiting for a younger, stronger chimp to come knock you off. But when you actually put in the work to earn respect through character,
It completely changes how you view yourself. It builds genuine self-esteem and lasting inner peace. You aren't constantly worried about being overthrown because your status resides inside of you. It's in your character, not in your job title or your bank account. Man, that is powerful. So just to quickly recap our whole journey today, we started out asking if money buys respect. We found out from the sociologist that money creates a class hierarchy, but true status is much more about your relative social value. Then we dug deep into the evolutionary biology and found out that we all have these two engines driving us. Dominance, which is the fearful, hoarding chimp, and prestige, which is the wise, sharing teacher. And we learned from the lab experiments that the real danger happens when dominant leaders feel insecure. That is when the active sabotage starts. They demote the talented people, they hide the crucial info, and they split up work friends. Whereas the prestige leaders empower everyone around them because they know their success is the group's success. And finally, we looked at Aristotle and virtue ethics to see that true, lasting human flourishing only comes from character. Finding that golden balance and treating the people around you with actual dignity. It really is a compelling, complete picture. And for you listening, I would say, take this knowledge out into the wild this week. The very next time you're sitting in a meeting, just quietly look around the room. Yes, do the field work. Just ask yourself, who in this room is operating from dominance? Who is hoarding the information? Who is subtly trying to make other people look small? And conversely, who is operating from prestige? Who is actively sharing the credit? Who is taking the time to teach? It totally changes the entire room when you start seeing it through that lens. You genuinely stop being intimidated by the office bully and you just start seeing them as, well, an insecure primate reacting to a perceived threat. It really does defang them quite a bit. It turns a scary interpersonal situation into just a fascinating biological observation. Absolutely. So here's a final provocative thought to leave you with as we wrap up. The science clearly says that we are wired for both of these strategies. We all have a little panicked chimp inside us, and we all have a wise teacher. Now, dominance absolutely worked for our ancient ancestors to protect scarce resources in a brutal zero-sum world, but prestige works vastly better for learning, innovation, and cooperation, which is really what the modern world is mostly built on. But the question you have to ask is, are our current social structures, our school systems, our corporate ladders, our political arenas, are they actually designed to reward the wise teacher? Or are they still secretly designed to reward the bully? And maybe even more importantly, in your own daily life, which of those two wolves are you feeding? That is the real question. Thanks for taking this deep dive with us. We'll see you on the next one. पूरे उत्साह के साथ आज के इस बहुत ही खास गहन अध्ययन की शुरुआत। आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि इस समाज में असली सम्मान, रुतबा और एक सचमुच खुशहाल जीवन आखिर कैसे हासिल होता है। हाँ, और आज के जो स्रोत है हमारे पास वो बहुत ही डाइवर्स है। बिल्कुल। हमने पैसे और सम्मान पर आधारित कुछ बहुत ही बेहतरीन दार्शनिक लेख लिए हैं। साथ ही सोशल स्टेटस और वर्चू एथिक्स के विकिपीडिया पेज खंगाले हैं। और सबसे दिलचस्प चीज एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का वो रिसर्च पेपर। एग्जैक्टली, डोमिनेंस बनाम प्रेस्टीज पर आधारित वो बेहद विस्तृत शोध पत्र। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि कैसे हम इंसान हमेशा से समाज में ऊपर उठने की होड़ में लगे रहते हैं। मतलब ये हायरार्की की जो भूख है ये कहाँ से आती है? अगर हम इसको शांति और थोड़ी गहराई से समझें तो सोशल स्टेटस की परिभाषा बहुत स्पष्ट है। विकिपीडिया के अनुसार ये असल में वो सम्मान, प्रभाव और सामाजिक मूल्य है जो एक समाज किसी व्यक्ति को देता है। मतलब कोई खुद को स्टेटस नहीं दे सकता, समाज देता है। बिल्कुल।
मैक्स वेबर का सिद्धांत अगर आपको याद हो, Right. तो उन्होंने कहा था कि समाज में स्तरीकरण यानी जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो मुख्य रूप से 3 चीजों से तय होता है: संपत्ति, रुतबा और शक्ति। प्रॉपर्टी, स्टेटस और पावर। हाँ, लेकिन यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि मैनर्स और केस का जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का पेपर है वो बताता है कि ये पदानुक्रम केवल इंसानों में नहीं होता। जानवरों में भी होता है, राइट? हाँ, जानवरों में भी होता है और इंसानों के पास इस सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर चढ़ने के 2 अलग-अलग विकासवादी तरीके हैं। पहला है डोमिनेंस यानी वर्चस्व, जो कि बहुत पुराना तरीका है शायद। बहुत पुराना। ये चिंपांजी जैसे प्राइमेट से आया है। इसमें बेसिकली डर, आक्रामकता और ताकत के बल पर रुतबा छीना जाता है। मतलब कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा, बस आपसे डर रहा है। एकदम सही। और दूसरा तरीका है प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा। ये केवल और केवल इंसानों में पाया जाता है। जब हमारे पूर्वज हंटर गैदरर थे ना, तब ये विकसित हुआ था। शिकारी संग्राहक वाली दौर में। हाँ, इसमें ज्ञान, कौशल और समूह की भलाई के जरिए लोग अपनी मर्जी से आपको सम्मान देते हैं। आप किसी को डराते नहीं है। क्या बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि ये दोनों तरह के लोग लीडर बनने के बाद कैसा बर्ताव करते हैं, खासकर तब जब उनकी कुर्सी खतरे में हो। अनस्टेबल हायरार्की वाली स्थिति में। बिल्कुल। शोध पत्र के जो प्रयोग थे वो बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाले थे। जैसे वो बहिष्कार या ऑस्ट्रेसिज्म वाला उदाहरण ले लीजिए। वो तो सच में चौंकाने वाला था कि एक डोमिनेंट लीडर कैसे सोचता है। हाँ, मतलब एक वर्चस्ववादी लीडर हमेशा टैलेंटेड लोगों को अपने लिए खतरा मानता है। वो अपनी टीम में अयोग्य लोगों को साथ रखेगा, लेकिन जो सबसे काबिल इंसान है उसे टीम से बाहर कर देगा। या फिर उसे ऐसा काम देगा जिसमें उसका कोई प्रभाव ही ना हो, जैसे किसी को सिर्फ टाइमर पढ़ाकर खड़ा कर देना। लिटरली एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान को बस कोने में खड़ा कर दिया। और एक और प्रयोग था डिवाइड एंड कॉन्कर वाला, बांटो और राज करो। जैसे एक अल्फा चिंपैंजी कभी भी दूसरे और तीसरे नंबर के चिंपैंजी को दोस्त नहीं बनने देता ना। वो इंसानी लीडर भी वही करते हैं। बिल्कुल। वो डोमिनेंट लीडर काबिल कर्मचारियों को आपस में बात करने से रोकते हैं, उन्हें अलग अलग कमरों में बैठाते हैं ताकि वो मिलकर लीडर के लिए कोई खतरा ना बन जाए। लेकिन मुझे सबसे अजीब वो गलत काम सौंपने वाला प्रयोग लगा, मिसअलाइनिंग स्किल्स। ओ हाँ, वो तो बहुत ही पेटी बिहेवियर था। मतलब सोचिए, जब एक डोमिनेंट लीडर को पता चलता है कि उसका एक जूनियर इंग्लिश लिटरेचर और क्रिएटिव राइटिंग में माहिर है, तो वो उसे एक मुश्किल मैथ्स का काम दे देता है, जानबूझकर, ताकि वो फेल हो जाए और लीडर का रुतबा बचा रहे। ये तो अपनी टीम का नुकसान करना हुआ। बिल्कुल। लेकिन इसके विपरीत जो प्रेस्टीज वाले लीडर्स होते हैं उनका नजरिया एकदम अलग होता है। प्रेस्टीज वाले लीडर काबिल लोगों को गले लगाते हैं। वो टैलेंट से डरते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें सही काम देते हैं और टीम को जोड़ने का काम करते हैं, भले इससे उनका अपना रुतबा थोड़ा कम क्यों ना हो जाए। क्योंकि उनका फोकस टीम की भलाई पर होता है। हाँ, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात है। जब किसी बाहरी दुश्मन से मुकाबला होता है ना, राइवल, आउट ग्रुप, तो डोमिनेंट लीडर भी अचानक बदल जाते हैं। ओहो हाँ, तब वो अपना फायदा भूल जाते हैं। बिल्कुल। तब वो भी ग्रुप की भलाई के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि अगर ग्रुप ही नहीं बचेगा तो वो राज किस पर करेंगे। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा संबंध हमारी आज की जिंदगी और उन फिलोसॉफिकल लेखों से है जो हमने पढ़े, पाथ ऑफ लाइट और 8 फीलिंग्स वाले लेख। आज की दुनिया की सच्चाई भी तो यही है। एकदम। आज लोग पैसे और ज्ञान का इस्तेमाल डोमिनेंस स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। पैसा आपको बड़ी गाड़ी और डिजाइनर कपड़े दे सकता है, जिससे एक शर्तों वाला सम्मान मिलता है। कंडीशनल रिस्पेक्ट। बिल्कुल, पर वो असली सम्मान नहीं है। जैसे मान लीजिए एक करोड़पति इंसान है जो वेटर से बदतमीजी करता है। हाँ, वो तो क्लासिक उदाहरण है। वो उस गरीब इंसान से हमेशा हार जाएगा जो वेटर को मुस्कुराकर थैंक यू बोलता है। क्योंकि लोग उस अमीर इंसान से सिर्फ उसके पैसे की वजह से दबते हैं, दिल से उसकी इज्जत नहीं करते। और यही बात ज्ञान पर भी लागू होती है। ज्ञान का जाल। सिर्फ एक चलता फिरता ज्ञानकोश होने से कोई इज्जत नहीं करता। खासकर अगर उस इंसान में विनम्रता ना हो। ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। बिना विनम्रता के ज्ञान वैसा ही है जैसे बिना फ्रॉस्टिंग का केक। बहुत ही सही तुलना है। सच्ची प्रतिष्ठा पैसे से नहीं, बल्कि सहानुभूति, ईमानदारी और दयालुता से मिलती है। और लेख का वो उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। लोकप्रियता हैलोवीन कॉस्ट्यूम की तरह है, जो थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, फ्लैशी होती है। हाँ, लेकिन असली सम्मान आपकी पसंदीदा हुडी की तरह है, आरामदायक, टिकाऊ और असली। और अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें
तो ये पूरी प्रेस्टीज की जो अवधारणा है वो प्राचीन यूनानी दर्शन से बहुत मेल खाती है, अरस्तु के दर्शन से, राइट? विशेष रूप से अरस्तु के वर्चू एथिक्स या सद्गुण नैतिकता से, जो हमने विकिपीडिया पेज पे पढ़ा था। तो ये वर्चू एथिक्स असल में क्या है? ये नियमों या परिणामों पर जोर नहीं देता, ये इस बात पर जोर देता है कि इंसान का चरित्र कैसा है, उसका कैरेक्टर। मतलब आप अंदर से कैसे इंसान है। बिल्कुल। और इसमें दो प्रमुख यूनानी शब्द आते हैं जो सुनने वालों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक होंगे। पहला है यूडेमोनिया। यूडेमोनिया, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है मानव जीवन का फलना फूलना, ह्यूमन फ्लरिशिंग। ये कोई पल भर की खुशी नहीं है। कोई टेम्परेरी खुशी नहीं जैसे शॉपिंग करके मिल गई। नहीं, ये एक सार्थक और बेहतरीन जीवन जीने की पूरी अवस्था है। और दूसरा शब्द है फ्रोनेसिस, फ्रोनेसिस, यानी व्यवहारिक ज्ञान या प्रैक्टिकल विजडम। राइट। ये वो समझ है जिससे इंसान ये तय कर पाता है कि किसी भी स्थिति में सबसे सही काम क्या है। और इसी में अरस्तु का वो गोल्डन मीन वाला सिद्धांत भी आता है ना? हाँ, स्वर्णिम मध्य मार्ग। राइट। अरस्तु का मानना था कि हर सद्गुण दो बुराइयों के बीच का संतुलन है। दो एक्सट्रीम्स के बीच का बैलेंस। जैसे एक तरफ है कायरता और दूसरी तरफ है उतावलापन। इन दोनों के बीच का जो एकदम सही संतुलन है वो है साहस। बहुत ही गहरा विचार है ये। और इससे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या हम अपने जीवन में बस डोमिनेंस के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ लोगों को डराने और अपना रुतबा दिखाने के लिए, या फिर हम यूडिमोनिया को पाने के लिए अपने चरित्र और सद्गुणों का विकास कर रहे हैं। ये सच में ये आत्ममंथन करने वाली बात है। हाँ, तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो बात बहुत साफ है। असली रुतबा और खुशी दूसरों को डराकर या सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाकर नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। ये इवोल्यूशन और दर्शन शास्त्र दोनों ने बहुत अच्छे से साबित कर दिया है कि सच्ची प्रतिष्ठा और जीवन की सार्थकता अच्छे चरित्र, सहानुभूति और समूह की भलाई से ही आती है, जो कि असल में हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। एकदम। और अब अंत में एक ऐसा सवाल छोड़ते हैं जो आज के हमारे स्रोतों से भी एक कदम आगे की सोच है। हाँ, ये विचार करने लायक है। देखिए, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक इंसानों के कई कौशल और ज्ञान की जगह ले रहे हैं। वही स्किल्स जो हमें प्रतिष्ठा दिलाते थे। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब मशीनें हमसे ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगी तो क्या इंसानी पदानुक्रम वापस आदिमानवों की तरह सिर्फ पैसे और ताकत यानी डोमिनेंस पर टिक जाएगा? क्योंकि ज्ञान तो अब मशीनों के पास है। हाँ, या फिर हमारा नैतिक चरित्र ही समाज में रुतबा कमाने का इकलौता और सबसे बड़ा पैमाना बनकर उभरेगा? ये सच में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल है। बिल्कुल। आप सभी इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहन अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय के साथ। पूरे उत्साह के साथ आज के इस बहुत ही खास गहन अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें यह समझना है कि इस समाज में असली सम्मान, रुतबा और एक सचमुच खुशहाल जीवन आखिर कैसे हासिल होता है। हाँ, और आज के जो स्रोत है हमारे पास वो बहुत ही डाइवर्स है। बिल्कुल। हमने पैसे और सम्मान पर आधारित कुछ बहुत ही बेहतरीन दार्शनिक लेख लिए हैं। साथ ही सोशल स्टेटस और वर्चू एथिक्स के विकिपीडिया पेज खंगाले हैं। और सबसे दिलचस्प चीज, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का वो रिसर्च पेपर। एग्जैक्टली, डोमिनेंस बनाम प्रेस्टीज पर आधारित वो बेहद विस्तृत शोध पत्र। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि कैसे हम इंसान हमेशा से समाज में ऊपर उठने की होड़ में लगे रहते हैं। मतलब ये हायरार्की की जो भूख है ये कहाँ से आती है? अगर हम इसको शांति और थोड़ी गहराई से समझें तो सोशल स्टेटस की परिभाषा बहुत स्पष्ट है। विकिपीडिया के अनुसार ये असल में वो सम्मान, प्रभाव और सामाजिक मूल्य है जो एक समाज किसी व्यक्ति को देता है। मतलब कोई खुद को स्टेटस नहीं दे सकता, समाज देता है। बिल्कुल। मैक्स वेबर का सिद्धांत अगर आपको याद हो, Right. तो उन्होंने कहा था कि समाज में स्तरीकरण यानी जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो मुख्य रूप से 3 चीजों से तय होता है। संपत्ति, रुतबा और शक्ति। प्रॉपर्टी, स्टेटस और पावर। हाँ, लेकिन यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि मैनर्स और केस का जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का पेपर है वो बताता है कि ये पदानुक्रम केवल इंसानों में नहीं होता, जानवरों में भी होता है, राइट? हाँ, जानवरों में भी होता है। और इंसानों के पास इस सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर चढ़ने के 2 अलग-अलग विकासवादी तरीके हैं। पहला है डोमिनेंस यानी वर्चस्व, जो कि बहुत पुराना तरीका है शायद। बहुत पुराना। ये चिंपांजी जैसे प्राइमेट से आया है। इसमें बेसिकली डर, आक्रामकता और ताकत के बल पर रुतबा छीना जाता है। मतलब कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा, बस आपसे डर रहा है। एकदम सही।
और दूसरा तरीका है प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा। ये केवल और केवल इंसानों में पाया जाता है। जब हमारे पूर्वज हंटर गैदरर थे ना, तब ये विकसित हुआ था। शिकारी संग्राहक वाली दौर में। हाँ, इसमें ज्ञान, कौशल और समूह की भलाई के जरिए लोग अपने मर्जी से आपको सम्मान देते हैं। आप किसी को डराते नहीं है। क्या बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि ये दोनों तरह के लोग लीडर बनने के बाद कैसा बर्ताव करते हैं, खासकर तब जब उनकी कुर्सी खतरे में हो। अनस्टेबल हायरार्की वाली स्थिति में। बिल्कुल। शोध पत्र के जो प्रयोग थे वो बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाले थे। जैसे वो बहिष्कार या ऑस्ट्रेसिज्म वाला उदाहरण ले लीजिए। वो तो सच में चौंकाने वाला था कि एक डोमिनेंट लीडर कैसे सोचता है। हाँ, मतलब एक वर्चस्ववादी लीडर हमेशा टैलेंटेड लोगों को अपने लिए खतरा मानता है। वो अपनी टीम में अयोग्य लोगों को साथ रखेगा, लेकिन जो सबसे काबिल इंसान है उसे टीम से बाहर कर देगा। या फिर उसे ऐसा काम देगा जिसमें उसका कोई प्रभाव ही ना हो, जैसे किसी को सिर्फ टाइमर पकड़ाकर खड़ा कर देना। लिटरली एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान को बस कोने में खड़ा कर दिया। और एक और प्रयोग था डिवाइड एंड कॉन्कर वाला, बांटो और राज करो। जैसे एक अल्फा चिंपैंजी कभी भी दूसरे और तीसरे नंबर के चिंपैंजी को दोस्त नहीं बनने देता ना। वो इंसानी लीडर भी वही करते हैं। बिल्कुल। वो डोमिनेंट लीडर काबिल कर्मचारियों को आपस में बात करने से रोकते हैं, उन्हें अलग अलग कमरों में बैठाते हैं ताकि वो मिलकर लीडर के लिए कोई खतरा ना बन जाए। लेकिन मुझे सबसे अजीब वो गलत काम सौंपने वाला प्रयोग लगा, मिसअलाइनिंग स्किल्स। ओ हाँ, वो तो बहुत ही पेटी बिहेवियर था। मतलब सोचिए, जब एक डोमिनेंट लीडर को पता चलता है कि उसका एक जूनियर इंग्लिश लिटरेचर और क्रिएटिव राइटिंग में माहिर है, तो वो उसे एक मुश्किल मैथ्स का काम दे देता है, जानबूझकर, ताकि वो फेल हो जाए और लीडर का रुतबा बचा रहे। ये तो अपनी टीम का नुकसान करना हुआ। बिल्कुल। लेकिन इसके विपरीत जो प्रेस्टीज वाले लीडर्स होते हैं, उनका नजरिया एकदम अलग होता है। प्रेस्टीज वाले लीडर काबिल लोगों को गले लगाते हैं। वो टैलेंट से डरते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें सही काम देते हैं और टीम को जोड़ने का काम करते हैं, भले इससे उनका अपना रुतबा थोड़ा कम क्यों ना हो जाए। क्योंकि उनका फोकस टीम की भलाई पर होता है। हाँ, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात है। जब किसी बाहरी दुश्मन से मुकाबला होता है ना, राइवल, आउट ग्रुप, तो डोमिनेंट लीडर भी अचानक बदल जाते हैं। ओहो हाँ, तब वो अपना फायदा भूल जाते हैं। बिल्कुल। तब वो भी ग्रुप की भलाई के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि अगर ग्रुप ही नहीं बचेगा तो वो राज किस पर करेंगे। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा संबंध हमारी आज की जिंदगी और उन फिलोसॉफिकल लेखों से है जो हमने पढ़े, पाथ ऑफ लाइट और 8 फीलिंग्स वाले लेख। आज की दुनिया की सच्चाई भी तो यही है। एकदम। आज लोग पैसे और ज्ञान का इस्तेमाल डोमिनेंस स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। पैसा आपको बड़ी गाड़ी और डिजाइनर कपड़े दे सकता है, जिससे एक शर्तों वाला सम्मान मिलता है। कंडीशनल रिस्पेक्ट। बिल्कुल, पर वो असली सम्मान नहीं है। जैसे मान लीजिए एक करोड़पति इंसान है जो वेटर से बदतमीजी करता है। हाँ, वो तो क्लासिक उदाहरण है। वो उस गरीब इंसान से हमेशा हार जाएगा जो वेटर को मुस्कुराकर थैंक यू बोलता है। क्योंकि लोग उस अमीर इंसान से सिर्फ उसके पैसे की वजह से दबते हैं, दिल से उसकी इज्जत नहीं करते। और यही बात ज्ञान पर भी लागू होती है। ज्ञान का जाल। सिर्फ एक चलता फिरता ज्ञानकोश होने से कोई इज्जत नहीं करता, खासकर अगर उस इंसान में विनम्रता ना हो। ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। बिना विनम्रता के ज्ञान वैसा ही है जैसे बिना फ्रॉस्टिंग का केक। बहुत ही सही तुलना है। सच्ची प्रतिष्ठा पैसे से नहीं, बल्कि सहानुभूति, ईमानदारी और दयालुता से मिलती है। और लेख का वो उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। लोकप्रियता हैलोवीन कॉस्ट्यूम की तरह है, जो थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, फ्लैशी होती है। हाँ, लेकिन असली सम्मान आपकी पसंदीदा हुडी की तरह है, आरामदायक, टिकाऊ और असली। और अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पूरी प्रेस्टीज की जो अवधारणा है वो प्राचीन यूनानी दर्शन से बहुत मेल खाती है। अरस्तु के दर्शन से, राइट? विशेष रूप से अरस्तु के वर्चू एथिक्स या सद्गुण नैतिकता से, जो हमने विकिपीडिया पेज पे पढ़ा था। तो ये वर्चू एथिक्स असल में क्या है? ये नियमों या परिणामों पर जोर नहीं देता, ये इस बात पर जोर देता है कि इंसान का चरित्र कैसा है, उसका कैरेक्टर। मतलब आप अंदर से कैसे इंसान है। बिल्कुल। और इसमें 2 प्रमुख यूनानी शब्द आते हैं जो सुनने वालों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक होंगे। पहला है यूडेमोनिया। यूडेमोनिया, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है मानव जीवन का फलना फूलना, ह्यूमन फ्लरिशिंग। ये कोई पल भर की खुशी नहीं है। कोई टेम्परेरी खुशी नहीं जैसे शॉपिंग करके मिल गई। नहीं,
ये एक सार्थक और बेहतरीन जीवन जीने की पूरी अवस्था है। और दूसरा शब्द है फ्रोनेसिस, फ्रोनेसिस, यानी व्यवहारिक ज्ञान या प्रैक्टिकल विजडम। राइट। ये वो समझ है जिससे इंसान ये तय कर पाता है कि किसी भी स्थिति में सबसे सही काम क्या है। और इसी में अरस्तु का वो गोल्डन मीन वाला सिद्धांत भी आता है ना? हाँ, स्वर्णिम मध्य मार्ग। राइट। अरस्तु का मानना था कि हर सद्गुण दो बुराइयों के बीच का संतुलन है। दो एक्सट्रीम्स के बीच का बैलेंस। जैसे एक तरफ है कायरता और दूसरी तरफ है उतावलापन। इन दोनों के बीच का जो एकदम सही संतुलन है वो है साहस। बहुत ही गहरा विचार है ये। और इससे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या हम अपने जीवन में बस डोमिनेंस के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ लोगों को डराने और अपना रुतबा दिखाने के लिए, या फिर हम यूडिमोनिया को पाने के लिए अपने चरित्र और सद्गुणों का विकास कर रहे हैं। ये सच में आत्म मंथन करने वाली बात है। हाँ, तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो बात बहुत साफ है। असली रुतबा और खुशी दूसरों को डराकर या सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाकर नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। ये इवोल्यूशन और दर्शन शास्त्र दोनों ने बहुत अच्छे से साबित कर दिया है कि सच्ची प्रतिष्ठा और जीवन की सार्थकता अच्छे चरित्र, सहानुभूति और समूह की भलाई से ही आती है, जो कि असल में हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। एकदम। और अब अंत में एक ऐसा सवाल छोड़ते हैं जो आज के हमारे स्रोतों से भी एक कदम आगे की सोच है। हाँ, ये विचार करने लायक है। देखिए, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक इंसानों के कई कौशल और ज्ञान की जगह ले रहे हैं। वही स्किल्स जो हमें प्रतिष्ठा दिलाते थे। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब मशीनें हमसे ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगी तो क्या इंसानी पदानुक्रम वापस आदि मानवों की तरह सिर्फ पैसे और ताकत यानी डोमिनेंस पर टिक जाएगा? क्योंकि ज्ञान तो अब मशीनों के पास है। हाँ, या फिर हमारा नैतिक चरित्र ही समाज में रुतबा कमाने का इकलौता और सबसे बड़ा पैमाना बनकर उभरेगा? ये सच में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल है। बिल्कुल। आप सभी इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहन अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय के साथ।